Hello, good morning students. So how are you? And online students, is audio video clear? Okay. So today we are here for anthropology optional orientation. So before that, I'll introduce myself. My name is Ganesh and I am going to teach you anthropology. So I gave 6 mains and I scored more than 270 marks in anthropology also. So this is the thing, and I have immense experience in this field. So you will be very interested in these lectures when I'll taught you. You just be interactive. I'll ask you some questions. You have to answer that, and then we'll move on. So we'll start with the anthropology optional orientation. But before that, why optional is important in UPSC civil services examination? Why importance of the optional? Why optional is important? Why you have to score more marks in optional? Because the first paper is essay, second is GS, and third is optional. The essay is for 250 marks, GS 1000. Out of that, 250 for ethics, and optional is for obviously 500 marks. Now, if you realize what is the good or good score to clear the mains? What do you think? You must have seen current marks. For optional, 270, 280. We just consider 270 plus. And what is the average score in essay student are getting? Even though they are not cleared mains, still they are getting around 110, 120, 120. Students are getting at least 120. But who are going to clear, or who cleared the mains going for interview, or who cleared the he came into the final list, तो उनको कितना आ रहा है? They are scoring 135 to minimum 135 to 140. Exactly. Then here in ethics, how much minimum score? The 100, 105 are people are scoring. But who are clearing the mains? They are scoring 110 to minimum. I'm not talking about the highest score or whatever. 110 to 115. So the main and remaining subject GS 1 to 3. That is for 750 marks. So how much marks are these? This is almost essay, ethics, and optional. That is come around 520, 530 marks. Exactly. So what is the cutoff of this year's mains? It's around 749 or 750. So these are the almost 520 to 530 marks. And if we consider this 750. So hardly a difference of 220. So now you left with, in 750 you have to score just 220. If you put more efforts in your optional, whether it's PSIR, whether it's sociology, whatever subject, if you put more efforts in optional, then you are going to score here. You have to do PYQ, you have to do the conceptual understanding, in-depth understanding. You will get this kind of marks. And once you having you are getting 270 plus in essay, this thing is going to help. If you consider anthropology, sociology, they're definitely going to one essay around that subject. If you consider PSI, definitely going to once essay around it. If you consider geography, obviously something is going to contribute in essay. So you don't need to much do here. Understood? So what's the thing? You just have to
कि वन फॉर्मेट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, स्टार्ट कैसे, एंड कैसे, all these things, and interconnection, intro to conclusion, all these things. So you can easily score 130 plus, easily score here without putting much efforts. And even GS knowledge also going to help you in essay. It just keep deciphering that statement. Then come the ethics. Ethics also, the basic terms, whatever, what is attitude, what is aptitude, what is integrity, all these terms, if you have all these terms, and after that examples, case studies, then you are definitely going to score this much mark. These things don't require much time, but optional need bit time. If you put more time in optional, you are definitely going to get a return. But if you put more time in GS1 to GS3, are you going to get a return? If someone having PSR optional, he is definitely not going to do well in GS1, but he is definitely going to do well in GS2. If someone having sociology optional, he is definitely going to do well in GS1. So exactly in similar way. So it's better to put efforts on optional, and optional need just 4 months, 4.5 months, maximum till 15 December. You will be definitely going to score this much of marks. Now moving on, key importance of choosing right optional. What is the importance of choosing right optional? अभी कोई ऑप्शनल ले लिया, देखो ज्योग्राफी ले लिया, अभी जनरल ट्रेंड क्या हुआ है, ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के बाद कि ओके अरे मैंने 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ ली, 8 स्टैंडर्ड की या 10 स्टैंडर्ड बहुत अच्छी लगी, आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट, और सम टॉपर कम अप and talked about geography and blindly took that option, got inspired in 2 days, and after that joined coaching, everything done. After that what will happen? Ki after some time, if that person didn't like that optional, because what he did, he went for someone else intuition or whatever he impulsive decision he took. After 6-7 months, if you want to change the optional, then what will happen? He come back to the zero पे आ गया. तो इसीलिए ऑप्शनल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए कि किसी के, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. ठीक है. सो मूविंग ऑन, हाउ टू चूज राइट ऑप्शनल. यू मस्ट बी नोइंग द फर्स्ट थिंग कि टेल मी, इंटरेस्ट होना चाहिए. बट वो इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? हाँ, सबसे नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी से आपने पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी और पॉलिटिकल साइंस मुझे अच्छा लग रहा है, तो फर्स्ट इज इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट दैट शुड नॉट बी अ impulsive decision. You have to study ki proper NCERT you must study. After that you have to go through syllabus, then PYQ, and here what you have to analyze? Question are repeated. Then one more trend. Then you have to check the how many questions are directly just addressing the syllabus. So what that kind of percentage, and after that you have to choose the optional. And after choosing that optional, one more thing you have to check, the guidance, availability of materials, notes, because resources is also important. If you took any optional and if there is no mentors, there is no teacher, what will you going to do? Or there is no proper books, then that will be the pull. So these things you have to keep in mind. The first interest, the syllabus, then PYQ, then availability of resources. Then come the what actually optional subject needs. Optional subject को क्या चाहिए? There are main 3 things. First thing is
इन डेप्थ नॉलेज। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्यों? क्योंकि एक तो ऑप्शनल बहुत वास्ट होता है, यानी आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन क्या किया है? बी कॉमर्स किया है आपका, सिविल इंजीनियरिंग, बट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर हाँ other subject, okay? So why you didn't opt for a civil engineering? You studied that. Exactly, the syllabus is vast, and whatever we studied in engineering, the beyond that books are suggested by the UPSC himself. Yes, post graduation level. So similarly in this subject also, in anthropology, in sociology, in PSR, geography, the syllabus is too vast. So in that, we have to need in-depth knowledge, understanding. Without understanding, nothing going to happen. With in-depth knowledge, we need conceptual clarity. Conceptual clarity is very, very, very important. Because the thing is, if you don't have conceptual clarity and in-depth knowledge, these two things are very crucial. Then only you can implement the things. Otherwise, if you don't have in-depth knowledge, you don't have conceptual clarity, there is no use. You're not going to write a good answer or whatever. After that, these two things, the third most thing, there are, you must have come across that there are very good people, they are having the in-depth knowledge, they are having conceptual clarity, but they are not able to get a good marks. You must have come, there are, must be your friends or seniors, but they are not getting good marks. Why? The next thing is exam. What this exam needs? We don't have to go for this thing कि हाँ मुझे जो knowledge है, ये exam को क्या चाहिए? What UPSC needs? The UPSC wants different thing. UPSC needs different thing. You have to address the demand of the examination. The examination demand is different. Why? Because they want to choose the administrator. They want to go beyond the academics. They want apply the knowledge. That's why this is important. Demand of the examination. That you have to understand. How that you are going to understand the demand of the examination? The demand of the examination, you can understand the questions, analyzing the PYQ. Yes, analyzing the PYQ. Then even analyzing the proper syllabus, what they how they framed the syllabus. There is also some logic. So that thing, because even PhD, there are many PhD students, they also don't clear, because this is the also important. And after that, all these three things. After that, all these three things we need, but the most important part comes is that is implementation. You have in-depth knowledge, you have conceptual clarity, you understand the demand of the examination, demand of the question, then implementation. For that, you have to write the answers. And answers bhi kaise hone chahiye? How answers should be? There should be some flow charts, some schematics, some diagram. Because what we have to do, we are having in-depth knowledge. If I told you to write about the women empowerment, you can write a whole essay on that. Exactly 900, 1500 words, 1200 words. If I told you to write 20 marker answer, you can write. If I told you 10 marker, you can also write. So that's the difference. Ki hame having knowledge and conceptual clarity, what examiner wants, that also you know. So we have to accommodate all the information in less word, and maximum we have to write 250 words, max 250 words. So in that 250 words, you have to convey whatever things you are having. Exactly, woman empowerment को 250 words में concise करना is a difficult task. Because if you have in-depth knowledge, if you have conceptual clarity, you understood the examination demand, still you can't write the
250 in 250 words, because you're having immense information. Once you understand, for that you need the schematic, you need the representation, you need the everything. Okay. Then comes the why one need a good mentor or teacher while studying anthropology or even any optional. क्यों चाहिए बता सकते हो? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी वो लेक्चर में हो जाता है, तो क्यों, यानी मेन रीजन क्या? अभी देर आर कोई भी ऑप्शनल का देखो, टेलीग्राम चैनल ओपन करो, you will get immense of videos. There are so many leaked videos, everything is there. If you go to the any Xerox shop, you will get any class notes. But then why you need a good mentor or good teacher? Just general guess. Why? And you are getting all these things, lectures you are getting free of cost. You are getting notes free, hardly free of cost. But why you need it? Why you should opt for good mentor or good teacher? Because this clarity also important for the optional. Otherwise, what happen? We don't even trust the teacher, or what? Otherwise, we are just I joined this course. If people told me to join, and I am having the access to the this thing, that free lecture or free notes. So that is one thing कि हम एक टीचर के ऊपर, एक मेंटोर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. ठीक है. Then come the next is authenticity of that thing, authenticity of that material. You can't deny that fact. You can't authenticate that material. Then where you can go? You can't go anywhere, because you have to limited time. Then come the next thing, the updation. वो वीडियोस और वो नोट्स कब के हैं, nobody knows. So updation are required. So then you have to spend some time, and the notes become bulky and bulky. After that, what's next? क्या हो सकता है अपडेशन के बाद? जनरल गेस. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसका फीडबैक. नेक्स्ट कि आपको कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आई, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे? तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई तो यू विल जस्ट ओके कि देर इज इन एंथ्रो, देर इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक इज देयर इन एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. देर इज अ यूनिट नंबर 10 इन पेपर 1. The difference between growth and development, human growth and human development. If you don't understand this thing, the basic concepts, how you are going to deal with that whole unit? And UPSC asks year 15 to 20 marks question every year they ask from this unit. And if you don't understand this thing, then how you are going to cover the whole unit? Though you can get average marks or below average marks in examination, but that is kind of you are mugging up. ठीक है. So for conceptual clarity also need the this thing. And then comes the next anthropology. Now we'll start with the anthropology. You must have why people are choosing anthropology. First thing, there are many seniors you must have seen ki they had a geography optional or other optional, they now shifting to, after 3-4 attempts, they are shifting to Anthro, and they are even clearing the exam. You must have come across these people. The thing is, anthropology is diverse subject. This is not monotonous because there are many different aspects in anthropology. And main thing about Anthro, there are much scoring area, and it also helps in general studies also. And less efforts required. If you get a good guidance and good notes, then less efforts is required in anthropology. That's why the recent trend in UPSC, the rush toward the anthropology are increased. There are so many aspirants are opting for the anthropology. तो ये mainly क्यों? एक तो scoring यानी more than 250
if you are studying good enough, I'm not telling ki best study, I'm just good level study, you can easily score the 250 plus. If you do properly previous year questions and general proper syllabus, then obviously you will get 250 plus marks, and after and next 30-40 marks you just need small push. So that's why people are opting for the more people are opting for the anthropology, and that is the subject is not monotonous. Subject is very interesting. There are in sociology there are society, culture, all these things, but in anthropology you have to study human evolution, yani human evolution, cultural evolution, genetics. So first thing we will study the कि what is anthropology. Anthropology यानी क्या, कुछ आइडिया है? कुछ भी नहीं, ठीक है. तो एंथ्रोपोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, यानी खुद की स्टडी है कि हम कैसे इवॉल्व हुए, हाउ ह्यूमन आर इवॉल्व्ड, हाउ कल्चर आर इवॉल्व्ड, हाउ जेनेटिक्स डेवलपमेंट are done in the, and then how this cultural and other aspect are come into the society, how society are established, how the stratification in the society happened, how the caste system came, all these aspects are come under the name. Basically we have to study human, यानी we have to study ourselves, how we, उसमें क्या आएगा पहले तो human evolution, and we our ancestor like they were primate apes, australopithecus से हम इवॉल्व हुए, ठीक है. अभी कौन है हम, निएंडरथल है या होमोसैपियंस है? होमोसैपियंस. तो होमोसैपियंस तक है, यानी बेसिकली हम वी आर होमोसैपियंस. तो अभी यहां से मैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा कि अभी हम यहां तक पहुंचे, ठीक है. तो जैसे इनिशियली हम क्या थे, बस हंटर और थे कि बस फूड के लिए. आफ्टर दैट क्या ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या चेंजेस आए कि अपोजेबल थंब आ गया. अपोजेबल थंब आ गया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, द वी स्टार्टेड मेकिंग द स्टोन टूल्स. द स्टोन टूल्स से क्या हुआ, तो वी यानी हंटिंग सिंपल हो गई, ये हो गई, तो कम्युनिटी लिविंग स्टार्ट हो गई, यानी बेसिकली कल्चरल इवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ है. नहीं, जो बॉडी चेंजेस हुए हमारे, तो उसके साथ क्या हुआ, कम्युनिटी लिविंग आ गई. क्यों, क्योंकि अभी हम खाना ज्यादा ये कर सकते हैं कि टूल्स आ गए, ये आ गए. फिर उसके बाद क्या हुआ, कल्चरल इवोल्यूशन में क्या हुआ, फायर. तो फायर आ गए तो क्या होगा कि हम कुक खाना चालू हो गए, तो उसमें फिर कहां पे चेंजेस होंगे, हमारे डाइजेशन में चेंजेस नहीं होंगे, तो वो चेंजेस हो गए. फिर उसके बाद हमारा जॉ की कुक फूड, तो उसमें चेंजेस, यानी बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन जो हो रहा है उसका इंपैक्ट कल्चरल इवोल्यूशन पे भी जा रहा है, कल्चरल इवोल्यूशन का इंपैक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन पे भी जा रहा है. और बाद में क्या हुआ कि हम सेटल हो गए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ न्यूलिथिक से, फिर हम आयरन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिटीज डेवलप होने लगी, ट्रेड और ये सब डेवलप होना, यानी बेसिकली द ह्यूमन इवोल्यूशन इज एंड कल्चरल इवोल्यूशन दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है. सो दीज आर द about human evolution and cultural evolution. Then next part come in the anthropology is thoughts and anthropological thoughts. तो thoughts में तो आपको पता है ये क्या होता है जनरली कि evolutionary theories रहेगी, यानी how evolution happen. तो यहां पे भी क्या होना चाहिए थॉट्स में कि you should understand the thinker, what thinker want to mean, यानी whether E.B. Taylor saying unilinear evolution or what. So all these things, what Morgan is saying and how the marriage are evolved. So all these aspects you have to understand, and thoughts along with physical anthro, are the most important aspect. You have to understand the thoughts because that is going to help you in answer writing. Because everything in any optional, even any optional, you can use that thinker, use that case study, use that
example to substantiate in other questions. So you will get definitely half or 1 marks, you will get more. So they're interconnected. Thoughts are going to give you more marks. But here you need the very good understanding. Then only you can do. Then come the physical anthro. What is physical anthro? Basically, physical anthro means कि genetics. ठीक है, तो genetic study, then whole how we are evolved, how variation in human being, then survival of the fittest, how human are survived. All these aspects are in the physical anthro. Even growth, development, then menopause, menarche, how that impacting the fertility, all that aspect. So it is very interesting, and how adaptation happen. यानी जो हिमालयस यानी पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो उनका हाइट वेट वो कम रहता है, तो वो क्यों होता है? तो एक्लिमेटाइजेशन कैसे, यानी जैसे हम ट्रेकिंग पे जाते हैं हिमालयस में स्पेशली, तो वंस यू गो यानी इवन एवरेस्ट पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि पहले वहां पे तुम्हें एक पर्टिकुलर लेवल पे यू हैव टू स्टे देयर फॉर सम डेज. व्हाई? एक्लिमेटाइज योर बॉडी टू दैट लो ऑक्सीजन एंड ऑल दैट थिंग. सो ऑल दीज एस्पेक्ट आर in this physical anthro. Then come the applied anthro. तो एंथ्रोपोलॉजी का एप्लीकेशन आपको लगता है कि डिफेंस में हो सकता है? कैसे? हाँ, ओके, हाँ, ओके, हाँ, वो you can give that example, but the main thing is you can use the anthropology in defense, like कि एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट में जो कॉकपिट रहता है उसको डिजाइन करने में कि हाउ द मूवमेंट शुड बी सिंपल. सो फॉर दैट कि अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज, अकॉर्डिंग टू द एवरेज बॉडी साइज, द कॉकपिट कैन बी डिजाइंड. द सिमिलरली गन, ऑल दैट थिंग कैन बी डिजाइंड. ठीक है, सो easy to use in difficult situation. That time the anthropology comes in. And one more thing is where anthropology can be applied. Nutrition. Yani malnutrition problem is there. So anthropology can be used in nutrition, and in nutritional anthropology, one of the branch of anthropology, there to improve the nutritional issue. Then comes the next thing कि in sports में anthropology use होता है कैसे? जैसे एंथ्रोपोलॉजी में अभी जैसे यू कैन कंसिडर अपने आवर गोल्डन बॉयज, दिस थिंग, नीरज चोपड़ा, Abhinav Bindra, they had a specialized training, this specialized thing before Olympic. Even in 2008 Beijing Olympic, the Abhinav Bindra first went to the China or somewhere in eastern country only to train himself. And this thing, Neeraj Chopra also went to the western countries, somewhere, I think a Nordic country or somewhere, to train. So, and what anthropology does, कि anthropology कि according to the particular person's thing, they decide the diet, कि diet क्या होना चाहिए, then they decide the exercise regime, and equipment की साइज क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो पर्सनलाइज. सो टू इंक्रीज द परफॉर्मेंसेस, हियर द दिस थिंग
anthropology utilized. Or Virat Kohli, 2012, you must have seen him. But now, anytime you heard about him, he's not playing because of he is having some issue related to fitness. No, but his diet and his dedication. That's why, and this branch is called kinanthropology. ठीक है, and that is even Indian government also implemented one thing in छोटा नागपुर, कि छोटा नागपुर में क्या किया कि जो हॉकी स्टिक्स होते हैं, तो वहां के जो लोग हैं, जो वहां के जो ये है, उनके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, किसमें, हॉकी स्टिक में, तो देयर परफॉर्मेंस इंक्रीज, जस्ट दे चेंज द स्लाइड चेंजेस इन हॉकी स्टिक. So these are the things. So this is the applied anthropology. Then comes the socio-cultural anthropology. Socio-cultural anthropology में क्या आता है? एक तो society, how society runs, social stratification. Then second come culture, how culture work. Then how culture is different from the society. Then how culture is diffused. एक culture दूसरी जगह पे कैसे diffuse होता है, कैसे exchange होता है, ये सारी चीजें culture में आएगी. After that आएगा marriage. अरे मैरिज यानी अभी वो जो चल रहा है 1 साल से, वो नहीं, ये मैरिज अलग है. तो मैरिज में क्या होता है बेसिकली कि हाउ मैरिज आर इवॉल्व. एक दिन में तो कोई चीज इवॉल्व नहीं होती, कि अभी कैसे पहले पॉलीगैमी थी, कई जगह पे पॉलीगैमी आज भी चल रही है, तो वो मैरिज कैसे इवॉल्व हुए. इवन मैरिज पेमेंट क्या होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ चीज, यानी जो शादी के पहले ब्राइड और ग्रूम, यानी जो अभी डाउरी सिस्टम क्या है, यानी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है शादी के पहले. तो डाउरी क्या होता है, कौन किसको देता है, ग्रूम के फैमिली को देती है, दैट इज डाउरी. बट इज दिस राइट थिंग? नो. व्हाई? Because this is a new phenomena and especially concentrated in South Asia and especially in India. Actually, traditionally what happened? Traditionally there are 4 systems like wealth, then comes the service, then comes the exchange, and then comes the gift exchange. यानी ब्राइड फैमिली जो है, यानी ब्राइड देगी, यानी क्यों देना चाहिए, यानी बेसिकली ब्राइड के ग्रूम के फैमिली ने ब्राइड के फैमिली को क्यों देना चाहिए, व्हाई एनी रीजन? कि जनरली यानी अभी क्या सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ पे, ब्राइड की फैमिली ग्रूम को देती है, पर क्या होना चाहिए एक्चुअली, ग्रूम की फैमिली ने ब्राइड को देना चाहिए जनरली. But that is also not, but relatively this is better. What happened during marriage? If the bride goes to the whose house, groom के घर जाती, so who is losing the member? Bride side. They अब उसको एज किया, सब किया, और उसके साथ साथ वेल्थ भी जा रही है. ठीक है, तो दिस इज यानी एक्सप्लॉइटेटिव. तो यहां पे क्या होता है वेल्थ में, तो ग्रूम फैमिली क्या करती है, ब्राइड फैमिली को वेल्थ देती है, यानी क्या, जैसे कुछ ग्रेन्स देगी या कुछ एनिमल्स देगी, ये सारी चीजें. तो उसके बाद दूसरा क्या, सर्विस यानी ग्रूम क्या करेगा, बिफोर द मैरिज ही वेंट टू द ब्राइड्स फैमिली एंड वर्क देयर, गिव देयर सर्विसेज. ठीक है, अंडरस्टूड? लाइक बुशमैन एंड ऑल दैट थिंग, दे रिक्वायर्ड सर्विसेज लाइक whatever the work, they might be 1 year or 10 years also, they have to work, then only they will get a bride. After that exchange यानी कि वो कुछ नहीं, यानी if groom's sister will get married to the bride's brother or bride's relative. So basically what happened here in exchange में,
एक्सचेंज में क्या होगा कि वो सॉलिडेरिटी बढ़ेगी, दो कम्युनिटी के बीच में सॉलिडेरिटी ज्यादा बढ़ेगी। उसके बाद गिफ्ट एक्सचेंज में क्या होगा, दोनों भी एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। तो ये बेसिकली सोशल प्रेस्टीज और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो करता है। ये दोनों क्यों, क्योंकि कॉम्पेंसेट द ब्राइड फैमिली। दिस इज फॉर मेनली कि हमारा सॉलिडेरिटी बढ़े, और ये क्यों कि सोशल प्रेस्टीज एंड ऑल दैट थिंग। सो ऑल दीज आर द मैरिज पेमेंट टाइप, ठीक है। तो और ये कैन बी कनेक्टेड टू द डाउरी और एनी अदर थिंग। So this is the basically about the socio culture. This we are going to study. Then comes the next topic here, religion. Religion. तो रिलीजन भी कैसे इवॉल्व हुआ। पहले हम एनिमल्स को ये करते थे, कुछ अभी भी कुछ ट्राइब्स एनिमल्स को मानते हैं, कुछ ट्राइब जो नेचर की थिंग्स है उनको मानते हैं, कुछ ट्राइब स्पिरिट को मानते हैं। आपने वो मूवी देखी है कंतारा? कंतारा में कौन सा गॉड है? पिंजुरलीला गॉड है ना, दैव। तो वो दैव क्या है? यानी स्पिरिट है वो। यानी वो क्या, वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, दे बिलोंग टू आई थिंक तुलु। वो स्पिरिट को एज अ गॉड मानते हैं, यानी स्पिरिट को वर्शिप करते, गॉड यानी वर्शिप करते। तो जब भी यानी नेचर, मैन, स्पिरिट, यानी वो क्या करते, स्पिरिट को गॉड मानते या वर्शिप करते। तो ये स्पिरिट कब क्या करता है बेसिकली, जो उस मूवी में देखा हमने, नेचर को हार्म किया तो ही गेट एंग्री, उनके लोगों को हार्म किया तो ही गेट एंग्री। सो अल्टीमेटली नेचर, मैन, स्पिरिट, दीज आर द हार्मोनियस रिलेशनशिप, एंड दिस इज अ स्पिरिट इज अ बेसिकली मैन का क्या है, एक बिलीफ है। सो दिस इज ऑल्सो वन रिलीजन काइंड, रिलीजन टाइप। So there are so many religion types, and how that religion evolved, how they started believing in religion. Some community treat snake as a their. So this is a religion. Then in socio-cultural, the political organization, how the earlier or tribal society or democratic society or republic, how or dictatorship is there, or what, all these things we are going to study in socio-cultural. Now in paper 2, the first two, 3 units, they are related to the Chalcolithic, Neolithic, then even Indus Valley civilization. We are going to study with the paper 1, and then comes the main part, ki Varna system, caste system, all this thing. So in this we are going to discuss even about the कि caste system होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, abolish करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आश्रमा। 4 आश्रमा होते, पता है? पता है? बताओ। एग्जैक्टली पहला ब्रह्मचार्य, देन गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो वो आश्रमा हो गए। देन पुरुषार्थ आ गए, पुरुषार्थ यानी अर्थ और एवरीथिंग। देन कर्मा, कर्मा यानी कर्म, हाँ, यानी जो हम जो भी हम करेंगे वही मिलेगा। ठीक है, इफ यू डू राइट थिंग यू विल गेट अ राइट थिंग। ठीक है, ऑल दिस थिंग यानी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी यू मस्ट हैव सीन टिल नाउ कि यानी एंथ्रो में सबसे पहले तो ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम कैसे इवॉल्व हो गए, जो एनाटॉमी ये वो, उसके साथ कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, उसके बाद थॉट्स आ गए, फिर आ गया फिजिकल एंथ्रो कि जेनेटिकली क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उसका यानी कंप्लीटली डाइवर्स थिंग। सो यू विल गेट इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी। एंड आफ्टर दैट इन पेपर 2 वर्णाश्रम, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। भी बचपन से सुनते आ रहे, आपके खुद के पेरेंट के साथ भी बात किया तो वो अच्छा बता देंगे, वो एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। ठीक है, तो आफ्टर दैट दिस वर्ना कास्ट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर सम इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कि उनके व्यूज क्या थे, जैसे एम एन श्रीनिवासा,
Gurre, all these things we are going to discuss. And after that, the modernization and westernization, impact on Indian society, Sanskritization क्या होता है, all this M.N. Srinivasa concept, all these things we are going to discuss in paper 2. And after that, the most interesting, most scoring part is part 2. Part 2 of Anthro. Paper 2. That is tribal. Tribe. It's completely tribal. And just because of this tribal unit, there's almost 50% weightage, more than 50% weightage on this. That's why the most of the geography people opt for this thing. Because they having the 6th unit in geography paper to cultural setting. So that's why, okay, and they studied everything, but not in detail. So that's why they opt for this thing, because 125 marks already done. Some thoughts are already done, so they come for this thing. And some part Indus Valley civilization, all that, they already studied in this thing, in GS also. ठीक है, तो हम ट्राइब में क्या क्या पढ़ने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ट्राइब वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कि ट्राइब के स्टेटस क्या है अभी की, पीवीटी जिसका के क्या प्रॉब्लम है, ट्राइब्स के शेड्यूल ट्राइब्स के क्या प्रॉब्लम है. अभी शेड्यूल ट्राइब्स के पीवीटी जिसके प्रॉब्लम तो जीएस में भी पूछेंगे, बट हियर वी हाउ टू इन एंथ्रो दे विल आस्क स्पेसिफिक इंडेप्टेडनेस. इंडेप्टेडनेस क्यों है, तो उसके रीजंस क्या है, तो ये तो कोई भी लिख देगा कि हेल्थ इशू है, तो ये रीजंस 5-6 रीजंस, अच्छे क्वालिटी रीजंस कोई भी, बट हियर यू रिक्वायर्ड द केस स्टडीज, एग्जांपल्स, good quality examples, and that too the from all over the country, not specifically you are just giving the example from the central India. ठीक है. And after that, even in Anthro, having this thing, the minorities, yani which minority in constitution, which minority are mentioned? Linguistic and religious. These 2 minorities are there, and उनका भी स्टेटस एंथ्रो में है. उसके बाद शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, देन नोमैडिक ट्राइब्स, डिनोटिफाइड ट्राइब, डीएनटी एंड एनटी, ऑल दिस थिंग, उनका स्टेटस क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, ऑल दिस थिंग आल्सो इन एंथ्रोपोलॉजी, दैट आल्सो गोइंग टू कम. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, कि हाउ ट्राइबल डेवलपमेंट हैपेंड सिंस इंडिपेंडेंस. कि जैसे हमने जो अप्रोच यूज किया था कि पंचशील आया था, ट्राइबल पंचशील जो नेहरू ने दिया हुआ था, तो उससे अभी तक क्या ट्राइबल सब प्लान्स आए, ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड आफ्टर दैट अल्टीमेटली कि ऑल व्हाट वी कैन सजेस्ट, कि बेटर ट्राइबल को बेटर बनाने के लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी जीएस में कहां पे हेल्प करेगा? हाँ, हिस्ट्री में, क्योंकि वहां पे हमारा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन आ रहा है, उसके पहले पैलियोलिथिक, ये सारी चीजें आ रहे हैं, सारे साइट डिस्कस करेंगे. कास्ट सिस्टम इसमें भी जीएस पेपर 1 में भी सोसाइटी वाला कंप्लीट पोर्शन. उसके बाद और ऐसे में तो ऑब्वियसली होगा ही, इथिक्स में भी, इथिक्स में कहा होगा जो बिहेवियरल कल्चरल चेंजेस रहते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली कि क्या चाहिए, कि कल्चरल चेंजेस, यानी आई थिंक 2-3 years बैक दे आस्क्ड द वन केस स्टडी, एंड दैट इज रियली हैपेंड इन इवन तमिलनाडु एंड बिहार आल्सो, कि मिड डे मील स्कीम, आपको मिड डे मील स्कीम पता है, तो वहां पे क्या हुआ था कि पेरेंट्स ने मना किया बच्चों को कि नहीं, वो खाना नहीं, मिड डे मील नहीं खाएंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे. क्यों? क्योंकि जो खाना बना रहे थे द मिड डे मील, तो वो शेड्यूल कास्ट थे. तो व्हाट हैपेंड, देयर डीएम वेंट देयर इन बिहार, ही एट देयर, so he gave the confidence, and ultimately the things are, so this thing is actually in culture. ठीक है. तो उस टाइप की यूपीएससी ने एक केस स्टडी पूछी थी, वो एकदम डिटेल्ड वाली थी, और उन्होंने बहुत सारे कंडीशन भी उसमें डाल दिए थे. तो देयर आल्सो, एंड इवन बिहेवियरल चेंज, कल्चरल चेंज रिलेटेड क्वेश्चन दे आल्सो यूपीएससी आस्क. सो देयर आल्सो यू कैन
include the sociology and even prelims also. PVTG के ऊपर लास्ट ईयर ही क्वेश्चन था. उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लास्ट 3-4 या 5 इयर्स बैक 2011 में भी था, 2013-14 में भी था. अभी रिसेंटली आई थिंक पैलियोलिथिक या नियोलिथिक साइट्स के बारे में क्वेश्चन भी था एक लास्ट 3-4 साल में. सो देयर आल्सो anthropology is and this tribal subplan and tribal related question every year there are 2 or 3 question minimum 2 question are there. So this is basically now this is next we are going to discuss how we are going to approach the anthropology. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, टाइम मैनेजमेंट. हमारे पास टाइम कितना है, दिन में कितना पढ़ते हो क्लास पकड़ के? 8 to 9 hours. यानी we consider 9 hours. And how much time you allocate for optional generally or planning to allocate? lectures को include करके, यानी बेसिकली आप 9 hours पढ़ रहे हो तो मिनिमम 5 or 15 minutes तो देना चाहिए. ठीक है. तो अभी मैं ये कैसे यूटिलाइज करना है दैट आई विल टेल यू. एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्रोच. सो दैट विल बी लाइक द फर्स्ट थिंग कि शेड्यूल कैसा होना चाहिए. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि देयर विल बी मैक्रो शेड्यूल, macro schedule, then there will be meso, and then ultimately micro schedule. ठीक है. अभी यू जनरली मस्ट हैव हर्ड कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक मैक्रो शेड्यूल होना चाहिए और फिर माइक्रो शेड्यूल, वीकली शेड्यूल बनाओ और फिर उसको फॉलो करते जाओ, चीजें हो जाएगी. फॉर मी the micro schedule is different, meso is different, and macro is big and basically one section. And if you consider anthropology ki physical anthropology one section, anthropological thoughts is one section, so that is maybe 15 to 20 lectures mein, that is macro plan. Then we start with the first micro plan and I'll explain you कि why this micro plan. ठीक है. This slide is done already. Macro schedule यानी section wise micro schedule. तो coming to the micro schedule basically कि not about and many people told about कि weekly होना चाहिए micro schedule, कि week में क्या क्या करोगे per day. I say you should follow the micro schedule like a one day plan. ठीक है. Why? Because if you set a target for 7 days, particular target, you divide that target in one day. You start with Monday. Consider you started Monday morning. What will happen? You start with the study. After some time you get bored, and that happens start of the week. You get bored and what you will think, अरे मैंने तो टारगेट ऐसे आराम से मैं अचीव कर लूंगा, अभी तो 6 दिन बचे. तो ऐसे करते करते जो सो कॉल्ड माइक्रो शेड्यूल के टारगेट्स है वो अचीव नहीं होते. आइदर यू मिस आउट ऑन आंसर राइटिंग और यू मिस सम टॉपिक और यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज जीएस और ऑप्शनल. सो बेटर दैन माइक्रो शेड्यूल शुड बी one day. So what we are going to do, 4 to 5 lectures will be a week. 4 से 5 लेक्चर्स होने वाले. तो उसमें लेक्चर रहेगा अराउंड 10:30 to 1 or maybe more than that or little bit here and there. So what we are going to do in lecture? First, the properly conceptual clarity, all this thing will be taught. You are going to write some notes or some running notes. After that, you will going to get the printed notes.
And during this, after the lecture, just before the lecture, minimum 10 to 5 to 10 minutes, 5 to 10 minutes or 10 to 15 minutes, we are going to discuss and revise, and that will be interactive revision कि कैसे प्रॉपरली हम क्या क्या कवर किया, क्या क्या मेन टॉपिक से, मेन कॉन्सेप्ट है, मेन डेफिनेशन से, मेन इंटरेस्टिंग एग्जांपल से, दैट वी आर गोइंग टू, एंड आफ्टर दैट यू विल गोइंग टू गेट वन क्वेश्चन दैट मे बी पीवाईक्यू और रिलेटेड टू पीवाईक्यू और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. जैसे अभी मणिपुर वाला इशू चल रहा है कब बहुत टाइम से, तो वो डेफिनेटली दिस ईयर दे गोइंग टू आस्क इन जीएस पेपर 3 and 100%, but they might ask in anthropology also, because that crisis lies in basically a inter-tribe conflict है, and वो आज का नहीं, बहुत टाइम से चले आ रहा है, तो they might be asked. So we are mostly going to cover the PYQ, but this kind of things we have to accommodate and according to the PYQs. So how many PYQs are there and how कितने करने चाहिए PYQ? एटलीस्ट 5 years के पीवाईक्यू करने चाहिए. तो 5 years के कितने होते हैं? एक जीए अने हम पेपर 1 एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 कितने क्वेश्चन है? 28 पेपर 1 में. तो एक साल के कितने हुए टोटल? 56 क्वेश्चंस. 56 यानी 5 साल के कितने हुए? अराउंड 280. तो हमें 280 क्वेश्चन कवर करने. तो 280 देयर मस्ट बी देयर गोइंग टू बी सम रिपीटेशन, द थीम रिपीटेशन, बट एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर्स रेडी होने चाहिए, एंड दैट टू विथ डिस्कशन, कि जस्ट ऐसे खुद के आंसर या किसी और के कॉपी कर लिए, नॉट. यू हाउ टू थिंक, यू हाउ टू अप्लाई दैट योर नॉलेज. ठीक है, तो एग्जैक्टली हियर वी आर गोइंग टू डू दैट. Exactly here कि you will get a question to write. So after that, after the lecture, what you are going to do? Just whatever if you want to have lunch or half an hour, 45 minutes break. After that, you have to spend at least 2 hours. That time only. Don't postpone it. कि मैं इवनिंग में करूंगा, लेट इवनिंग या कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग करूंगा. नो, do then and there, because your memory is fresh, because we completed topic, we quickly revise that thing, so you having the things in mind. So what will happen? In 2 hours you can properly consolidate whatever you written in class and the extra things you are provided. So proper compilation हो जाएगा, proper notes बन जाएंगे. ठीक है, after that 2 hours, next 15 to 20 minutes you have to spend on this, whatever the question. Initially question will be easy, straightforward question, because you have to gradually you will grow. So done the question, yani basically understanding part done. This you can utilize even in any optional. ठीक है, understanding part is done. Revision first, quick revision, then your own self revision, after that implementation, and then come the next day. तो हम next day क्या करेंगे? Next day, before coming to the class, spend 15 to 20, max 15 to 20 minutes. Even if you come here, you just go through the keywords of yesterday's class. So you will be again into that mode. After that, after coming to the class, we are going to revise the yesterday's thing in 5-10 minutes. And that will be interactive. That time you have to speak more. After that, what we are going to do? Then yesterday's that question we are going to discuss. So properly discussion. So ultimately, and there will be like, I'll give you some more points. The brilliant student will give some more points. So ultimately your answer, that PYQ answer will be the best answer, best model answer. Exactly. So, and after that, the next lecture will start after 10 to 15 minutes. समझ में आया? So here the micro schedule ends. Yani how many revision we did?
how many revision we did? The first thing, the lecture, then quick revision, then your own revision, then implementation. What, while you writing the answer, that time also you are kind of recalling, revising. After that, before lecture, after that in lecture, that will be interactive. After that, the question we are going to discuss, there also some points are going to, and कुछ नहीं तो सारी मेन कीवर्ड्स ये वो एग्जांपल्स ऐसे बार बार डिस्कस हो जाएंगे क्विकली. जो ये 5-10 मिनट का भी रहेगा तो वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जहां जहां पे आपको इश्यू आ जाएगा, यू हैव टू जस्ट कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन. एंड इवन योर PYQ, इफ यू वांट टू check by me, you can send me, I'll do that. ठीक है. So this is about the micro schedule, and then come the meso schedule. So meso schedule यानी basically the Monday is done, Tuesday is done, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday and Sunday. So you all 4 to 5 days you followed the properly. ठीक है. You on, we consider 5 classes. What will happen? फ्राइडे के दिन आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, इनिशियली 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपके पूरे नोट्स रहेंगे. वीकेंड पे आपको 2 मोर क्वेश्चन, एंड वो दो क्वेश्चंस रहेंगे, वो थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चंस रहेंगे, इंटरलिंक्ड रहेंगे. तो वीकेंड पे बस ये रिवाइज करना है, और ये रिवीजन करने के लिए वीकेंड पे ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा. एंड 2 क्वेश्चन भी लिखने हैं. ठीक है. तो ये हुआ हमारा मेसो शेड्यूल डन. तो सेम सिमिलर, जब तक मैक्रो शेड्यूल का टारगेट नहीं आता तब तक हमें रिवाइज करते जाना है. ठीक है. तो रिवाइज करते जाना है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ओ डन. तो हमारा यहाँ पे पूरा सेक्शन, यहाँ पे यू विल गेट अ 2 to 3 डे ब्रेक, कि उसमें आपको फिर से पूरा रिवाइज करना है. तो आपने पूरा रिवाइज किया तो क्या होगा, उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट होगा. डेफिनेटली इफ यू फॉलोड दिस अप्रोच, तो आपका सेक्शनल टेस्ट हो गया, तो आपका वो सेक्शन 100% श्योर शॉट हो गया. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आफ्टर दैट दिस सेक्शनल सेट, नेक्स्ट मैक्रो शेड्यूल, next section, ultimately by 15th December we are going to finish whole optional. ठीक है. पूरा optional और with your own notes, and even when the if weekend, I'll tell you when you have to make a micro notes, कि 1 page notes, हर topic syllabus topic 1 page notes, point, some example, that's it. I'll teach you how to make that notes also, and when you have to go for that notes. कि now you have enough content, enough interlinkages there, just make one page notes. ठीक है. तो 15 दिसंबर तक आपके पास आपका पूरा सब कुछ डन हो जाएगा. तो कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. आता कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस होने के बाद कि एंड ऑफ द कोर्स आपके पास क्या क्या रहेगा. सबसे पहले आने एग्जैक्ट रिसोर्सेस और सारे नोट्स रहेंगे. नोट्स किसके रहेंगे, खुद के हैंड रिटन, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी रहेंगे और क्रिस्प नोट्स भी रहेंगे, जो एकदम एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ने के लिए. और वो दोनों भी किसने बनाए हुए रहेंगे, खुद ने. और सारा डेटा, यू डोंट हैव टू गो फॉर एनीवेयर, कोई भी बुक नहीं रेफर करनी पड़ेगी. ऑल द डेटा, ऑल द अपडेशन विल बी प्रोवाइडेड. सेकेंड, यू विल बी हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी. Why? Because you are making own notes, you are interacting in the class, you are asking the doubts. Then third, compilation of PYQs and even tests, sectional test and all that. And these are going, कितने होने वाले ये? Almost is going to be 400 or 450 questions. Will be minimum 400 to 450 questions will be there, and your own compilation, in your own handwriting, and we are just going for hardly 1 or 2 questions a day. So
5-year PYQ will be, or more than that will be covered, and some extra questions. So all these 3 things will be ready, and after that what you have to do, just have to write the comprehensive test, and you are done with the. And not only this, you will be having one more thing with you. What that? That is the confidence. Now optional is done. I'm done with the optional. I have the short notes, I have the comprehensive notes, I done the answer writing, I gave the test, and just giving maximum 5 hours. Initially 5.5 hours or 6 hours, but after the 1 or 2 weeks, you just need 5 hours. Just giving 5 hours for 4.5 months, done. Everything will be done. So you will get a confidence. So what will be in preliminary become a very dicey. You must have seen there are so many deserving people that didn't clear. So you will get a confidence in preliminary. Yes, I'm done with the optional. I just have to clear this pre. I'm into the list. And even after the pre, whenever you need help or answer writing checking, I'll be definitely there. I'm going to check myself. I'm not going to give anybody whatever the answers. I'm going to check. And the one more thing here is, whenever you have doubts, directly come to me, directly ask me. Okay? So this is the basically, and during the course I'll tell you how to make notes, how to make a crisp notes. I'll share you some students notes how they made, and I'll whatever the from our notes only how they made. Okay? Any questions? Any strategy related? Okay. Okay. Then thank you for your time.